So hello, namaste, and Khamma Gani Royals family. It's 10 everywhere. It's the 10th week since we started the Royals on the Road show. It's the 10th episode, 10th season of CPL as well. And most importantly, it's the 10th episode. We are in the double figures now. It's the 10th episode of Royals on the Road. So hello and very warm welcome to एपिसोड 10 ऑफ रॉयल्स ऑन द रोड डिस्कशन करने वाले काफी सारी चीजों के बारे में जो अभी अभी लेटेस्ट इंडिया की T20 वर्ल्ड कप की स्क्वाड अनाउंस हुई है उसके बारे में डीप डिस्कशन करने वाले बहुत मजा आने वाला है एशिया कप के कॉन्स के बारे में भी काफी सारा डिस्कशन होने वाला है और एक जबरदस्त डिस्कशन लेंगे सीपीएल में जो फायर हो रहा है बारबेडोस रॉयल्स के द्वारा जिसका मजा आ रहा है देखने का तो उसके बारे में भी एक जबरदस्त डिस्कशन करेंगे बट दिस इज योर होस्ट जयदीप सिंह सलूजा फॉर टुडेज एपिसोड और आई गॉट a super duper super intelligent super cool super duper bunch of super royals with me hello guys hello Sanchit क्या हालचाल All good, Jaideep bhai. I mean, you can already see it from the smile of our face. We are very excited and काफी मजेदार 2022 चलते आ रहा है for the Royals family and really excited to talk all about it because Barbados Royal ने जो धमाका मचाया है Caribbean में it's really amazing. So it's a good time to be a Royal, that's for sure. यस ग्रेट 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 वेदांत मराठी में क्या बोलते हैं तू कसा आहेस कैसे हो ऑल गुड हाउ अबाउट और यू मतलब बस सब बस बढ़िया सब चल बढ़िया रहा है। सब बढ़िया सब मुंबई में वेदर भी बढ़िया चल रहा है। एवरीथिंग्स गुड। बिल्कुल बिल्कुल दैट इज ग्रेट अबाउट सुपर रॉयल्स कि हमारे पास पूरे इंडिया से ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड से फैंस जुड़े होते जैसे कि ताहिर इज हियर विद अस स्ट्रेट अवे फ्रॉम द कैरेबियन हाय ताहिर हाउ आर यू मैन Hi, hi, I'm good. How are you doing? Happy to be here. I'm doing great. Yeah, it's going really well in the CPL. Barbados Royals just we call in Hindi tabla baja diya. I mean, Barbados Royals have beaten each and everyone. It's going really well for them. Yeah, going really well for the start of the CPL. We've won all of our games and then just losing unlucky on a few days back against the Jamaica Talawas. But we've been doing extremely well. The boys have been performing extremely well. Everybody seems to be clicking. Everything is just clicking all at once. So we are happy in Barbados. Barbados is happy when Barbados is winning. We are happy. And when West Indies is winning, we're even more happier. So we're happy with Barbados Royals, and we're grateful for the overall Royals group because the whole franchise, people have bought into the franchise, people have bought into the engagement, people have bought into the love all the way from India. So we're definitely loving that here in the Caribbean. That's amazing. That's amazing. But Sunil भाई कैसा हो जयपुर कैसा है एकदम बढ़िया एक्चुअली आई एम इन अहमदाबाद राइट नाउ अच्छा सो एज अच्छा वी से इन गुजराती आवा दे आवा दे बिल्कुल बिल्कुल आएंगे अगले सीजन में और तोड़ के जाएंगे तहलका मचाएंगे मजे करेंगे बट स्टार्ट करेंगे इंटरैक्शन फ्रॉम द करेबियन प्रीमियर लीग बिकॉज इट्स गोइंग रियली वेल really well in the Caribbean Premier League for the Barbados Royals and the kind of season we dreamt of it's going it's currently going for the Barbados Royals, and every boxes have been ticked by the Barbados Royals. All the management, all the team structure is going really well for them, and basically the team and the combination, the coaching structure which we wanted is doing really exceptional. What do you think, Tahir? No, everything has been clicking, and the coaching structure from the coaching team, even the reserves that are coming into the team, they're clicking straight away. So that's what you would want going into a tournament. We did extremely well in the Skyach 10 over competition, and that was a good build up. I think that was a good win for us coming into the CPL. We now have to continue it going into the important stages of the competition because obviously we can do well. We don't want to be like our Ghana Amazon Warriors who gets to the final or semi-final every year and then doesn't win. So you want to go the entire way this year. So this is the important phase now of the competition. So it's time to get our team rightfully balanced. I know Quinton de Kock and David Miller is leaving, so that's going to be a big void for us to fill. So we're looking forward to see who comes in. So hopefully we get a big player coming, two big players coming in,
but we'll see who comes in for that. But this is the important part of the competition. What has gone is gone, and what is to come now is even more important because we've started well, but it's how you end now. Yes, yes, exactly. Well said. The team is doing really well, and you have to look forward now because what is done is done. You have to look forward now. But I think as most of the matches have already been won by the Barbados Royals, it's now and comparatively an easier job for them to make it to the semi-finals. But from the semi-final onwards, it might be difficult for them. So team have to be ready and up for the challenge. But वेदांत भाई आपको कैसा लग रहा है बारबेडोस रॉयल्स का परफॉर्मेंस? आई मीन बहुत बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा. खाली एक मैच हारे हैं और डकवर्थ लुइस की वजह से हारे हैं वो भी, और 6 रन का मार्जिन था. टीम अच्छा खेल रही थी, गेम वापस पकड़ में आ रहा था, बट कहीं ना कहीं बारिश आ गई, उस वजह से सब कुछ खराब हो गया. तब तक सब सही चल रहा था, बट उसके अलावा के 6 मैचेस, दो 6 मैचेस, दोज वर कंप्लीटली एक्सेप्शनल, डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस. क्या व्यूज है आपके? Exactly, बहुत dominating performance था. Last match which we lost was because the six which Powell hit in the last over before the rain came. So that was pretty unfortunate. He was struggling throughout the innings, and that one shot, the margin of loss was also just 6 runs. So it's unfortunate that rain came, but ये सब चलता रहता है क्रिकेट के गेम में, so we can't like do much. बट उसके पहले के जो 6 मैचेस हम देखे, तो एकदम डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस था. काइल मेयर्स, डिकॉक, कॉर्नवॉल, जब भी उसको चांस मिला, he outplayed every single opponent. So it's just exceptional. संचित, निकुंज ने क्वेश्चन पोस्ट किया है कि मुजीब इज डूइंग वंडर्स फॉर बारबेडोस, कैन वी आल्सो सी हिम इन राजस्थान रॉयल्स? मतलब सुपर रॉयल कम्युनिटी का इस साल से ऐसा सिस्टम रहा है, मैं देख रहा हूँ कि चलो हाँ इसको भी ले आते हैं, उसको भी ले आते हैं, सबको ले आते हैं, क्योंकि जब आपके पास टीम में कॉम्बिनेशन एक बढ़िया सेट होता है ना, तब आप उसमें उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है, हाउ वी कैन डू गुड विद दैट, उस बारे में सोचते हैं, उस बारे में तैयारी करने का सोचते हैं. तो क्या लगता है आपको, पॉसिबल हो सकता है ये? Well, definitely possible, Jaideep bhai, because we have seen that ये जो family franchise जो concept आया in the recent few years, you see many players from the different teams under the same parent brand playing for each other. So who knows, next auction maybe we can see our Mujib playing for Rajasthan Royals. But speaking from Barbados point of view, the best part about this team is that it doesn't really have that much dependence on individual stars. I mean, you really look at this team and you can see a star player in each and every role, and that is the reason why the team is doing success. I mean, if you look at the likes of Kyle Mayer, Quinton de Kock, the captain David Miller, and even in bowling you have Mujib and even Jason Holder for that matter. So you have star players in each and every role, and that's what actually makes us a champion team. And I mean, earlier this year, आपने देखा ही होगा Rajasthan Royals को भी, we weren't overly dependent on one particular player. Yes, Joss had a stellar of a season, but still there was a group of players coming together to give us those results. So this is what we really love to see. And as I said at the start of the show, that this is the best time to be a Royals fan. Previously it was a Rajasthan Royals fan, but now since we are so in diversity, we have a franchise in South Africa, we have franchise in Caribbean, so it's really a good time to be a Royals fan. So as Tahir mentioned, it's time to go all the way. So as he said, that the change of mentality from just settling for a final or a semi-final now to overcompensating on winning it, I think that is what was required from this season onwards. So hoping that we don't lose the momentum after that narrow loss and we go all the way this time. बिल्कुल बिल्कुल, विल डेफिनेटली गो ऑल द वे दिस टाइम. बट सुनील, जैसा संचित ने मेंशन किया, लास्ट सीजन वाज वेरी डिप्रेसिंग फॉर अस. वी एंडेड ऑन नंबर 8 पोजीशन, नंबर 6 पोजीशन, माय बैड, सॉरी. And we managed to win only 2-3 games in last season. So बहुत बहुत खराब था लास्ट सीजन बारबेडोस रॉयल्स के लिए. बट इस साल जैसा कमबैक किया है, जैसे राजस्थान रॉयल्स ने कमबैक किया था फाइनल्स तक जाके, ऑब्वियसली चाहेंगे बारबेडोस रॉयल्स जीते, वी शुड विन द ट्रॉफी. बट जिस तरह का कमबैक किया, वो लास्ट से फर्स्ट पे आना लगता बहुत आसान है कि आपने ऑप्शन किया, आपने टीम चेंज करी, फिर उसके बाद आपने नए प्लेयर्स लाए, आपने जो है स्ट्रक्चर बदल दिया, लेकिन इसके पीछे कितनी मेहनत लगती है, कितने सालों की तैयारी होती है, तब जाके आपको रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं. और
And when we were at the bottom of the table in last season, all the fans were depressed, but now we are happy because the team is performing. So क्या लगता है आपको, क्या कारण है इसके पीछे, और क्या क्या आगे बारबेडोस रॉयल्स करने के लिए देख सकती है? जयदीप, जैसा संचित ने बताया, लाइक राजस्थान रॉयल्स एंड बारबाडोस रॉयल्स both were like in bottom if you see the like 2020 or 19. But since the last year we have changed our auction strategy and we have moved from superstars to make every single player to pick a unique combinations, ताकि सभी प्लेयर अपना 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 कंट्रीब्यूशन देंगे, तो हम ऑब्वियसली एक दो मैच में नहीं होगा बट सभी मैचेस में हम अच्छा करेंगे। तो जैसा संचित ने बताया, तो हमने एक दो प्लेयर्स को छोड़ के हमने एक टीम बिल्डअप की, दोनों में, बारबाडोस में और राजस्थान में भी। और जैसा जोस बटलर ने राजस्थान के लिए किया, अभी यहाँ पे हमारे पास नए बॉस है, कॉर्बिन बॉस। सो एवरीवन इज गिविंग देयर बेस्ट एंड ऐसा ही चलता रहा तो मुझे लग रहा है कि दिस ईयर और नेक्स्ट ईयर, लाइक दिस इज द डिकेड फॉर रॉयल्स फैन एंड वी विल हैव इनफ ट्रॉफीज soon in our cabinet. Exactly. We'll have as many possible trophies in our bag. Because, as Sanchit mentioned, this is the time to be a Royal fan, and we all are enjoying this time as a Royal fan. But Tahir, if you start the playing 11 from top, Kyle Mayers is performing, Quinton de Kock is performing, Azam Khan is performing. Then you've got Rakeem Cornwall is performing, David Miller is performing. Then you've got Obed McCoy is performing, Jason Holder is performing. All of them are giving their best performances. But if I ask you to select one standout performer from the whole squad, I know that will be difficult to answer, but who is going to be? No, obviously the one standout performer is Kyle Mears. I think everybody knew his ability, but obviously in the T20 franchise he has not proved himself. I just let me give you a brief history on Kyle Mears. He came through the under 19 system in the West Indies. So he played for West Indies under 19 with like Craig Brathwaite, John Campbell, who all have gone on to play for West Indies. He spent a lot more time playing regional cricket. So, one of the issues in the Caribbean is that we do not play enough regional cricket. We don't even play enough first class cricket because we have such small franchises, small amounts of players. So he doesn't. So he played about 7 to 8 years before he made his West Indies debut. So his mindset is a lot better than a lot of the other players. I know he would have played for Gujarat Lions. He would have been in their squad, but he didn't get a game this season. Was Gujarat or was it the Super Giants? One of Lucknow, the two. Lucknow. Lucknow, correct. Yeah. But he didn't get a game. So now with his performances in this CPL, it proves himself on the world stage as a franchise player going forward. So I think he's the one standout. But by the way, Ramon Simmons, the youngster, the West Indies under 19 player, he's bowled extremely well. He's been a bit unlucky not getting much wickets, but he came in crucial overs and bowled really well. So for me, two of them have been the standout performers because we expect Quinton de Kock to perform, we expect David Miller to perform, we expect McCoy to perform, we expect Holder to perform. But Kyle Mears, we weren't sure of his consistency, one, in T20 cricket, in franchise cricket, but then Ramon Simmons coming in as a youngster, 19 years old, only making his first class debut this year for Barbados, and he did really, really well. So him now coming in and performing, didn't take much wickets, but bowling like how he bowled against TKR the other night. He bowled well against a Pollard and a Narain and a Puran. And those are established cricketers. So imagine if he continues getting the opportunity moving forward. Yes. Vedant, question post किया है सौरभ ने. UZ and Ash for RR and Mujib for Barbados Royals. Spin doing wonders for Royals family. Who would the Pal Royals be eyeing for in the South Africa T20 auction now? क्या लगता है? It's kind of difficult, but I think to go with a local player, they should eye Tabrez Shamsi because he isn't picked by any of the franchisee. Uh, they could also pick Keshav Maharaj, who is regular in South African circuit. He knows the conditions there pretty well. So having a two local spinners will definitely help. As we saw what our apna UZ and Ash did for us, having two local spinners in playing 11 definitely helps. So Shamsi and Maharaj would be great. There is also George Linde, uh, and I don't know if I'm pronouncing right. Pigeon Fortune is Yeah. someone who has a great economy rate.
and also done well when he got opportunity for South Africa. Unfortunately, didn't last long. But last time when they toured Pakistan, he was in the side and he did pretty well. So these three would be a local option. Apart from that, they could think about Adil Rashid or say Ryan Burl, who can hit a few down the order. He's in good form too. Then Sikandar Raza would also be good, giving you 2 3 overs, and he's in form of his life. So it would be great to see these spinners in our circuit. बिल्कुल बिल्कुल very rightly mentioned Vedant. I would like to mention one thing here कि गलतियों से कैसे सीखा जाता है. आप अपनी मिस्टेक से कैसे सीखते हैं. The spin department was really weak in the last mega auction. आपके पास spinners अच्छे थे, but they weren't up to the mark for this Indian Premier League standard. तो आपने उनमें कैसे changes लाने की कोशिश करी. आपने ऑप्शन में कैसे बड़े प्लेयर्स पे इन्वेस्ट किया और बड़े ही नहीं है तो सुपर बड़े प्लेयर्स में इन्वेस्ट किया. आप लोगों को क्या चेंजेस करने की जरूरत थी. आप लोगों को किस पोजीशन पे कौन से प्लेयर को बिठाना होता है. ये सब चीजें एनालाइज करके फिर उसके बाद आप अपनी पूरी एक नई स्ट्रैटेजी बना के उसको इम्प्लीमेंट करना. दीज ऑल थिंग्स आर रियली डिफिकल्ट बट व्हेन द रिजल्ट्स कम आउट, when the result is there, जैसे राजस्थान रॉयल्स फाइनल में पहुंची, बारबेडोस रॉयल्स इज परफॉर्मिंग वेल कंसिस्टेंटली, तब जब आपको रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं तब बहुत बहुत सुकून मिलता है. बट संचित, थोड़ा सा डिस्कशन अब स्लाइटली इंटरनेशनल क्रिकेट की तरफ शिफ्ट करूंगा. T20 वर्ल्ड कप इज ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज और मोस्ट ऑफ द स्क्वाड्स हैव बीन ऑलरेडी अनाउंस्ड. तो इंडियन स्क्वाड भी अनाउंस हो चुकी है एंड आई वुड से 50% of the fans are happy, but I would also say 50% of the fans are not happy because of the some selections. Obviously कुछ players जो कि reserves में होने चाहिए थे शायद वो मेन टीम में, कुछ प्लेयर्स जो मेन टीम में वो शायद रिजर्व्स में होने चाहिए थे और कुछ प्लेयर्स ऐसे भी हैं जो कि शायद मेन टीम में होने चाहिए थे बट वो रिजर्व्स में भी नहीं है. तो देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन दिस. संचित, ओवरऑल स्क्वाड को क्या रेटिंग्स है? Straight away, I think, Jaideep, if you ask me, whenever India announces a squad for the ICC event, you can expect majority of the people to not be happy. I mean, it is happening since 2017, I guess, since the Champions Trophy. I mean, everyone will have different views about why Yuvraj Singh is not there in 2013, why is Gambhir not there, why is Stuart Binney in the side. So ऐसे सवाल तो आते ही रहते with the Indian squad. But if you ask me for my personal opinion, I would slightly rate it as an okay squad. I mean, you definitely expected 95% of the squad to be the same. I mean, जो Asia Cup में हमने देखा था इंडिया का squad, it was going to be that only in the World Cup. I'm slightly disappointed with a few calls that were made, and I think we all know which calls I'm talking about. So let's just dive straight into it. I personally expected Sanju Samson to be at least in the reserves. I know that it's difficult to directly just get him in the squad without him playing the Asia Cup leg because that's what the protocol was. So after watching the likes of Rishabh Pant's performances over the last few series or maybe an year for that matter, I thought that maybe putting someone like a Sanju Samson amongst the World Cup squad would have been better since 6 matches mile the against Australia and South Africa. We could have tested Samson in that particular role in that middle order where we are looking to play Rishabh Pant and then make a call to whether Pant plays or Sanju plays in the final 11 in the World Cup. But now since we actually just eliminated Sanju out of the picture, it is disappointing because we don't have enough options. We just have to persist with the likes of Pant and hope that he performs in a big tournament like the World Cup. So overall, a disappointing selection for Sanju Samson. But अगर पूरी squad देखा जाए, it is as what we all predicted. So we as Indian fans would like to hope that we go all the way in the World Cup. But let's just hope. I think the start will be crucial. We don't want to see what happened in 2021 World Cup. We want to start well, and the road for World Cup will not begin next month. It begins from Tuesday when we take on Australia. So तभी से I want to see the playing 11 which will play against Pakistan play from the Australia series, and then let's see what happens. अमेजिंग अमेजिंग. सुनील, आपसे भी सेम ही क्वेश्चन है कि आपके क्या व्यूज है इस चीज पे कि इंडियन स्क्वाड कैसी है, क्या चेंजेस हो सकते थे, क्या क्या जो है बॉक्सेस टिक हुए हैं, आपके क्या व्यूज हैं इस पे? Actually, there are some positive views and some negatives as well.
We all know we wanted Sanju to be in team, but unfortunately, like Sanchi said, at least he should have been in reserve, because the kind of talent he has, he can change the match anytime. Like in 2011 World Cup, we had an option of taking Yusuf Pathan or Rohit Sharma, and selector picked Yusuf Pathan because he was such kind of talent that he can win the match on his own. So we need someone in our middle order, some guy like that. Like Rishabh Pant is like he's left-handed batsman, so he must be there. But I think we could have picked Shikhar Dhawan as a lefty. He could also give a balance in the opening, and yeah. Also, I would like to say the role of Ravichandran Ashwin. Like we know Jadeja was a very impactful player, but as Jadeja is not there and we have picked Ashwin, so I am seeing Ashwin playing at number 7 and to do the role with bat as well as he did with Rajasthan Royal, and the combo of Ashwin and Chahal would be one to watch out for this World Cup. Okay. Let's see whether Ashwin gets a chance in the playing 11 or not. But Tahir bhai, you've got a question here. Will West Indies Yeah, win the but World Cup or not? I think it's going to be tough. Obviously, I would like West Indies or India to win the World Cup, but I think it's going to be tough this year because we are in a redevelopment phase. We're now phase going away from the era of the Russell, the Narayan, the Gales. I actually saw a stat the other day that this is the first time in a T20 World Cup that Gale, Russell, Bravo, Pollard, or Narayan will not be playing. So this is a big loss for us. But I think we have good players. If Kyle Mears can continue his form, if Nicholas Puran can come to the party, Rob Mapole, we have match winners. We have match winners in our team. But do we have tournament winners? I don't think that we have tournament winners. But they could come and surprise us. But definitely I will want them to win, but I don't expect them to win this World Cup. Maybe next World Cup if we continue with the same squad. I just want to touch in on Sanju Samson. I think he was very unlucky. He's one of the few players that has not gotten a run in the Indian team. And every time a squad is picked, I ask, why is Sanju Samson not given the chance, not given 3, 4, 5 games on a trot? If you see him comes in, he gets 1 game a series, 2 games a series, sometimes 3 games. Even in the West Indies when they came early in the year, what happened? He only played 2 games and then he was dropped. And he got starts in both games. So I think he needs to be given a run in the Indian setup. And that's where he can get settled. And then 1 minute he's opening batting, then he's batting in the middle order. I think he needs to state his claim and thing, but we know the politics around cricket and we know politics around selection. Same thing in the West Indies. We have almost 300,000 selectors trying having an opinion. So it's just a matter of moving forward. And I think Sanju is one. I think he needs to come forward, continue performing, continue stating his claim, and he will continue moving forward. It's like Ambati Rayudu. If you remember, he was frustrated as well. I know my friend, my brother, he just mentioned of Yusuf Pathan and then Gautam Gambhir. But they have so many players that have talent and they don't get selected. Even Kyle Mears, 2019 in our local competition, Kyle Mears scored the most runs. He was the first player to score over 500 runs in 7 matches in our local T20 competition. He did not make it to the franchise. Hayden Walsh as well, took wickets every year, every single year with his leg spin, was not selected. What happened? He then got the chance in the CPL and he performed and he went from there. So it's really a matter of unlucky. You know, the selectors have their players, they have their choices, but we're not selectors. We can judge them and we can critique them. And hopefully, if we do get in that position, we can make the change. But guys, I have to log off at this time. I have another interview at this time as well. But thank you so much. You have to teach me some more. I think it's Tamil you speaking. I know my buddy mentioned about Gujarati. My granddad is from Gujarat. So I have India connections. I know many of you may look at me and say, like, India, you know, like, you're from Rajasthan? No, nahi male. Gujarati ma. You understand? So, Kale Aujo, we'll catch up again soon. I would love to be on the show next week when I have a little more time, but I have another session, another engagement here, another interview right now on sports as well. So hopefully see you soon. Take care. Kale Aujo, and we'll catch up. बिल्कुल ताहिर भाई, thank you so much. What does Thank you so Bilkul much. mean? What does Bilkul mean? Aramti? बिल्कुल Is is that like absolutely. Absolutely. like Aramti? Aramti in Gujarati. Yeah. Ji, okay. Kudafis, we'll catch up soon then. Yeah, sure. Bye bye. Okay, take care. Bye bye. वेदांत भाई, थोड़ा सा वेस्ट इंडीज पे बात चल रही है, तो एक सवाल लगते हाथ ये भी बनता है कि एंड्रे रसल का सिलेक्शन नहीं हुआ है,
जो है T20 वर्ल्ड कप की स्क्वाड में. एंड्रे रसेल, आई वुड नॉट से कि द मोस्ट डिजर्विंग, द मोस्ट फैन फेवरेट प्लेयर, बट कहीं ना कहीं अगर आप रीबिल्डिंग फेज में हैं तो आप उन प्लेयर्स को जरूर प्रेफर करना चाहेंगे जिनके पास एक्सपीरियंस है, और स्पेशली जो T20 लीग्स में लगातार खेल रहे हैं और लगातार परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप उन प्लेयर्स को देखना चाहेंगे. आई वुड नॉट से अगेन कि फैन फेवरेट या फिर बिल्कुल टॉप नॉच फॉर्म में प्लेयर हो, ऐसा कुछ नहीं है, बट आप रीबिल्डिंग फेज में तो जरूर आप एक्सपीरियंस प्लेयर को तो पिक करना चाहेंगे. क्या कहते हैं आप? पिक तो करना चाहिए, लेकिन हमको वेस्ट इंडीज के सिलेक्शन प्रोसेस का हिस्ट्री भी पता है. इफ दे आर नॉट मेकिंग देमसेल्व्स अवेलेबल, मतलब ओनली वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप खेलना इज क्वाइट डिफिकल्ट. क्योंकि फिर जो प्लेयर्स जो कंसिस्टेंटली एवरी सीरीज एवरी मैचेस खेल रहे हैं, उनके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा कि वो परफॉर्म कर रहे हैं और फिर जो बंदा खेल रहा नहीं है कंसिस्टेंटली, वो डायरेक्ट वर्ल्ड कप खेले. So if you want to get into World Cup squad, you should at least play 4-5 series before. So you should make yourself available. डायरेक्ट वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप खेलने से मतलब जो बंदा अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसके मेंटालिटी पे भी इफेक्ट करेगा कि मैं अच्छा खेलते हुए भी मुझे वर्ल्ड कप में नहीं ले रहे टीम में. जो बंदा लीग मैचेस खेल रहा है वो डायरेक्ट सिलेक्ट हो रहा है. सो दैट विल ऑल्सो मेंटली प्लेयर्स को अफेक्ट करेगा कि लीग खेल के भी वर्ल्ड कप खेला जा सकता है. सो अगर यू प्ले सीरीजेस बिफोर वर्ल्ड कप, देन डेफिनेटली सिलेक्ट हो जाओगे, ऐसा मुझे लग रहा बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली वेदांत आपने कि खाली T20 लीग्स खेल के अगर आप इंटरनेशनल टूर्नामेंट की टीम में अगर सिलेक्ट हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं उन प्लेयर्स के साथ ये जस्टिफाइड नहीं है जो कि लगातार आपकी टीम में खेल रहे हैं, आपके लिए परफॉर्म कर रहे हैं, कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इंटरनेशनल इज मोर काइंड ऑफ फॉर्मल थिंग इन दिस क्रिकेटिंग टर्म्स. और जो लीग्स हैं, लीग्स कहीं ना कहीं मोर टिल्टेड टुवर्ड्स अर्निंग मनी. तो कहीं ना कहीं ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है कि आप लगातार टीम के साथ जुड़े रहें तो आपका वर्ल्ड कप की स्क्वाड में भी सिलेक्शन होता है. बट संचित, अगेन बहुत बड़ा सवाल है कि दिनेश कार्तिक टीम में खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, कहाँ खेलेंगे, ऋषभ पंत टीम में खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, कहाँ खेलेंगे, दिनेश कार्तिक ऋषभ पंत दोनों साथ में खेलेंगे या नहीं खेलेंगे. साथ में खेलेंगे तो 5 बॉलर प्लस एक ऑलराउंडर खिलाना पड़ेगा. तो मतलब बहुत लंबा डिस्कशन चल सकता है इस पे. तो आपके क्या व्यूज है दिनेश कार्तिक और ऋषभ पंत वाले इस मैटर पर? आई थिंक इट्स अ बिग डिलेमा जयदीप भाई, बट अगर एशिया कप देखा है सब लोग ने तो आई थिंक इट्स फेयर टू से दैट ये जो वी आर कॉम्प्रोमाइजिंग अ बॉलर टू प्ले बोथ दिनेश कार्तिक एंड पंत इज गोइंग टू बी अ बैड आइडिया इन द वर्ल्ड कप. सो एटलीस्ट कुछ तो लर्निंग्स लेके जा सकते हैं इन द मेन टूर्नामेंट फ्रॉम द एशिया कप. सो आई वुड वांट एटलीस्ट वन ऑफ पंत और दिनेश कार्तिक टू बी इन द प्लेइंग 11 एट ऑल टाइम्स. तो इट मैटर्स कि कौन खेलेगा तो भी. बट इफ यू आस्क मी फॉर माय पर्सनल ओपिनियन, I'd have Dinesh Karthik at number 6 because he's a proven finisher and already franchise के लिए RCB के लिए उन्होंने काफी अच्छी finishing की है. Even for India when he got that chance, I think he scored brilliant 42 not out, 49 not out. We have seen that against South Africa and in the other tours as well. So Dinesh Karthik एक proven option है आपके पास number 6 पे and he's going to be there. I know कि difficult पड़ता है for someone to just get like 5 or 6 balls to make an impact into the match. But Dinesh Karthik has done it in the past, so that is why I will prefer him over Rishabh Pant because I don't have anything against Pant, but just that कि T20 में उनकी जो position, especially for India में खेलते हैं वो at number 4, number 5, it really doesn't suit a player like Pant. I would definitely have Pant in my team if he's batting in the top 3, but already you can see top 3 तो पूरा crowded हो चुका है and I don't think any of KL, Rohit or Kohli is going to sacrifice their place for Rishabh Pant. So it makes Pant's case a little bit difficult for that. So I would not have Rishabh Pant being wasted in the middle order. I would rather play someone like a Dinesh Karthik. And अगर आपको left-handed option चाहिए है, then you can promote someone like an Akshar Patel up the order. We have seen India doing it with Jadeja जब भी early wickets आते थे and spin used to dominate. We have seen Jadeja coming up at number 4, number 5. So Akshar Patel is also an option. He's not a bad batter. I think we've already seen his caliber with the bat. So if we play Dinesh Karthik, then Akshar Patel will be our number 7. But if we play Rishabh Pant, then we'll have our very own lovely Ravi Ashwin as our number 7. So left and right hand combination will be complementing each other. So I personally would have Dinesh Karthik and Akshar Patel. But who knows? Let's see what the management thinks.
Yes, let's see what the management thinks. But दिनेश कार्तिक का संचित आपने मेंशन किया तो वो दुखती नस पे हाथ रखने वाली बात हो गई, क्योंकि मेरे को वो वाला मैच याद आ गया जो आरसीबी ने राजस्थान रॉयल्स को हराया था इस सीजन। क्योंकि कहीं ना कहीं मतलब पूरा मैच आपने डोमिनेट किया है, उसके बाद एकदम से दिनेश कार्तिक आते हैं ऑल ऑफ अ सडन और फोड़ के रख दी पूरी बॉलिंग लाइनअप। मतलब आपको पता भी नहीं चला कब इनके 5-6 विकेट गिरे हैं और हम लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं, और कब आप मैच हार गए पता ही नहीं चला। तो दिनेश कार्तिक हैज गॉट द कैलिबर कि वो मैच के किसी भी पॉइंट में आके और मैच को पलट सकते हैं। और स्पेशली आफ्टर कंसिडरिंग द फैक्ट दैट जडेजा इज नॉट देयर, तो किसी मैच में अगर हार्दिक पांड्या नहीं चलते हैं तो फिनिशर इज गॉन। तो उस केस में आप लोग चाहेंगे कि नीचे वाले बैट्समैन पे प्रेशर नहीं आए, तो उस केस में आप लोग प्रेफर करेंगे कि दिनेश कार्तिक आए और थोड़े बहुत रन स्कोर कर दे। एंड एज यू मेंशन कि अक्षर पटेल हैज आल्सो गॉट द बैटिंग स्किल्स। तो अगर ऐसा कोई सिचुएशन आता है तो उस केस में दिनेश कार्तिक भी जो है कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, अक्षर पटेल भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो विच मेक्स बैटिंग लाइनअप सुपर स्ट्रॉन्ग इवन आफ्टर जडेजा नॉट बीइंग देयर। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है ये काफी अच्छी चीज है। बट सुनील, मेरे को लगता है कि टॉप 4 तो इंडिया के कंप्लीट है। रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव। आप कोई चेंजेस सजेस्ट करते हो या फिर यही 4 के साथ जाना चाहोगे? Don't think anybody would suggest any change in that. And it's been settled since like 2-3 years. But what we need is that middle order in middle over. And I think since 2019 World Cup, we couldn't find our middle order. And like we had Ambati Raidu, then we took that 3D guy, and since then we have some changes. But I think Rishabh Pant has to be there because he's only left-handed player who can like have the caliber to bat. Akshar Patel, I would differ with Sachin because I haven't seen him to perform in top 5 like ever. He is a good, he can play a good cameo, but I can't see to straightly promote him into such a big tournament and to play as a lefty. So I think Rishabh Pant has to be there at number 5, and I think Karthik could also play at number 6 because to have someone like Huda who doesn't have that experience, and the pressure of World Cup is very high, and I think we can see both of them playing, and after that we can have Hardik and Ashwin. So we have a good depth, and they can also give a bowling option with Ashwin and Pandya. So that could solve our middle order problems. Well said, Sunil, but I would slightly disagree कि अगर ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक एक साथ एक ही प्लेइंग 11 में खेलते हैं तो दैट मीन्स कि या तो आपको सूर्य कुमार यादव को या केएल राहुल को, क्योंकि विराट कोहली रोहित शर्मा तो बाहर जा नहीं सकते, ऑब्वियसली विराट केएल राहुल वाइस कैप्टन है तो वो भी बाहर नहीं जा सकते। तो उस केस में आपको सूर्य कुमार यादव को ड्रॉप करना पड़ेगा, 4 नंबर सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। या फिर अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको 4 मेन बॉलर्स खिलाने का परमिशन मिलेगा, उसके अलावा 5th बॉलर इज गोइंग टू बी हार्दिक पांड्या। तो आई थिंक कि आप बॉलिंग के साथ ज्यादा पंगे नहीं ले सकते, स्पेशली व्हेन यू आर प्लेइंग अ वर्ल्ड कप एंड इन ऑस्ट्रेलिया। तो वहां पर आप 6 बॉलिंग ऑप्शंस रखें तो ज्यादा बेटर रहेगा। बट आई आई ऑल्सो एग्री कि आप लेफ्ट एंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन भी चाहते हैं टीम में, तो उसके लिए आपके पास एक ही रेप्यूटेड ऑप्शन है ऋषभ पंत, तो आप उनको भी बिल्कुल आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट तो नहीं कर सकते। बट लेट्स सी हाउ इट गोज। वेदांत, कहीं ना कहीं ये सब डिस्कशन इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि जडेजा इंजर्ड। जडेजा के बाहर जाने से मेरे यंगर ब्रदर के साथ डिस्कशन चल रहा था कि एक जडेजा के बाहर जाने से 3 रिप्लेसमेंट करने पड़ते हैं। एक तो जडेजा लेफ्ट हैंडर है, तो लेफ्ट हैंडर टीम में लाना पड़ता है। दूसरा ये है कि जडेजा जो है बॉल स्पिन कराते हैं, तो एक स्पिनर अंदर लाना पड़ता है। तीसरा ये है कि जडेजा मैच फिनिश करते हैं, तो एक मैच फिनिशर ना भी हो लेकिन एक बैट्समैन अंदर लाना पड़ता है। तो जडेजा का इंजर्ड होना इस इसकी कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है टीम इंडिया को कि आप प्लेयर्स ऐसे ढूंढ रहे हैं जो जडेजा को रिप्लेस कर सके, बट आई डोंट थिंक एनी प्लेयर इन द होल वर्ल्ड राइट नाउ कैन रिप्लेस जडेजा, क्योंकि उनके पास जो एबिलिटीज हैं वो मैच फिनिश करते हैं, वो 2 से 3 ओवर या मे बी 4 ओवर भी आपको स्पिन बॉलिंग के दे देते हैं। उसके अलावा एक्सेप्शनल फील्डर, ये तो बात अपन भूल ही नहीं सकते कि ही इज एन एक्सेप्शनल फील्डर। तो कितना बड़ा लॉस है जडेजा का टीम में नहीं होता।
जडेजा का नहीं होना मतलब, अभी जैसे आपने बताया कि डिस्कशन पूरे इंडिया में ही चालू है, जडेजा ना होने से 3 रिप्लेसमेंट करना पड़ रहा है। बट एज अ प्लेयर वी ऑल नो व्हाट जडू कैन डू ऑन द फील्ड। प्राइम एग्जांपल इज जब हमारा मैच था हांगकांग के खिलाफ, हांगकांग वाज गोइंग गुड बट दैट वन रन आउट व्हिच ही डिड, व्हिच दैट चेंज द मोमेंटम। वही फिर जडू ना होने की वजह से टीम कॉम्बिनेशन कितना ऊपर नीचे होता है, वो हम अभी देख रहे हैं हमारे डिस्कशन में, हमारी ओपिनियन मैच नहीं कर रहे हैं। सो हम वही बोल सकते हैं कि इट्स अ बिग लॉस डेफिनेटली। मतलब इन फ्यूचर अगर देखा जाए तो मतलब अक्षर पटेल के लिए अपॉर्चुनिटी भी है, अगर जड्डू नहीं है ही कैन प्रूव हिमसेल्फ इन दैट सेंस। और नंबर 5 पे अक्सर कर सकते हैं बैटिंग, मतलब वी ऑल नो हिज एबिलिटी। ही हैज फिनिश्ड गेम फॉर दिल्ली इन दिस सीजन फ्रॉम नोवेयर against Mumbai, if I'm not wrong. So I feel ki we can like use him as a floater, play Dinesh Karthik at 6. Akshar will be a floater, and if we are playing Harshal, then our batting depth is बहुत बहुत नीचे तक अपना depth है, क्योंकि Harshal can also hit, we all know. So मतलब batting के बारे में we don't need to fear. It's all about maintaining the balance. And anyway, I'll prefer Karthik over Pant any day. बिल्कुल बिल्कुल कार्तिक ओवर पंत, काफी लोग एग्री करेंगे आपकी इस बात से, बट संचित एक अनादर एक और पहलू इंडियन क्रिकेट टीम का, जो कि है बॉलिंग लाइनअप। इस पे भी काफी डिस्कशन हो सकते हैं, क्योंकि मोहम्मद शमी का ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट सिलेक्शन हुआ है, बट वो मेन टीम में नहीं है, वो रिजर्व्स में है। तो उनको एज अ पावर प्ले बॉलर हम सब देखना चाहेंगे, स्पेशली इन ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस, जहाँ पे बाउंस रहता है, जहाँ पे जो है बॉल कैरी करती है। तो बहुत अच्छे पावर प्ले ऑप्शन रह सकते हैं मोहम्मद शमी। तो वहां पर हम सब उनको देखना चाहेंगे, बट उससे पहले उनको परफॉर्म करना पड़ेगा, उनको ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट परफॉर्म करना पड़ेगा। आई वुड से कि भुवनेश्वर और जसप्रीत बुमराह ऑलमोस्ट कंफर्म्ड है। तो एक अर्शदीप या फिर मोहम्मद शमी के बीच में एक स्लॉट खुला हो सकता है। फिर यूजी चहल ऑलमोस्ट कंफर्म्ड है। फिर उसके अलावा आप जो है फिफ्थ बॉलर की तरफ देखेंगे, तो फिफ्थ और सिक्स बॉलर की तरफ देखेंगे तो आपको एक स्पिनर जो है टीम में चाहिए। उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा बैट्समैन चाहिए, तो आप अक्षर पटेल की तरफ देखेंगे। या फिर आप एक्स्ट्रा स्पिनर ऐड करना चाहते हैं तो रवि बिश्नोई या रविचंद्रन अश्विन की तरफ देखेंगे। रवि बिश्नोई ऑब्वियसली रिजर्व्स में है, तो उनको पहले मेन स्क्वाड में लाना पड़ेगा। तो काफी सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है इसमें भी, बट आपकी क्या ओपिनियन है बॉलिंग लाइनअप पे? वेल अगर देखा जाए स्क्वाड, तो आई थिंक द इंक्लूजन ऑफ मोहम्मद शमी वाज जस्ट एज अ प्रिकॉशन। तो जैसे कि हमने देखा है कि हमारे बॉलर्स काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो रहे हैं इन द रीसेंट टाइम्स। वी हैव सीन भुवनेश्वर स्ट्रगलिंग विद इंजरीज, हर्षल पटेल इज जस्ट कमिंग आफ्टर एन इंजरी, एंड जसप्रीत बुमराह का भी एक फिटनेस कंसर्न था, जस्ट गेटिंग इंजर्ड बिफोर द एशिया कप। तो आई थिंक वो कैलामिटी अवॉइड करने के लिए वी हैव केप्ट समवन लाइक एक्सपीरियंस ऑफ मोहम्मद शमी इन द रिजर्व। आई एम नॉट श्योर, आई डोंट थिंक टू बी ऑनेस्ट इज गोइंग टू बी there in the playing 11. I think playing 11 bowling के हिसाब से it is going to be 95% to 99% similar to what we have seen in the Asia Cup. But if you ask me personally, I'll stick with my top 7. As I said, I think both Dinesh Karthik and Akshar Patel at number 6 and 7. And number 8 pe, as you mentioned, it is going to be Bhuvaneshwar Kumar. I don't think he's going to be dropped after such an amazing Asia Cup as well. Then उसके बाद दो सीमर्स के अगर हम बात करें, then it is going to be of course Jasprit Bumrah, and I would pick it. It's a toss up between Harshal Patel and Arshdeep. You can't obviously pick both of them in this kind of combination. You can pick it if you drop an extra batter, but I would go with Arshdeep Singh. I don't know how many of you will agree with this, but I would want a left arm threat in my team, and especially जो हमने लास्ट वर्ल्ड कप में देखा है, the power of left arm, having that left arm variety in your side is going to be very very crucial, especially power play. And Arshdeep is also known for his talent bowling in the death over. So just imagine the likes of Jasprit Bumrah and Arshdeep, and even Yuzvendra Chahal, हमने राजस्थान रॉयल्स के लिए काफी देखा हुआ है, usually loves to bowl in that 16th to 17th over वाला period. So having that options I think will definitely help our bowling plus the balance as well. तो हर्षल पटेल को सैक्रिफाइस करना होगा यहाँ पे. आई एम नॉट श्योर हाउ यू कैन प्ले बोथ Arshdeep and Harshal Patel in the same side. It is going to be really difficult. You have to compromise a batter to play all of them. But
I would definitely pick Arshdeep and Bumrah. तो इससे क्या होता है कि you even relieve someone like a Bhuvaneshwar Kumar of the death overs duty. तो एशिया कप में भी हमने देखा है, he's having a little bit of trouble bowling in the death. He's not good as what he used to be that in previously. But अगर power play की बात करें, who is arguably the best bowler in the world in the power play right now. So we can utilize Bhuvaneshwar Kumar's 3 overs in the power play, and then we can rely on Arshdeep and Bumrah and even Chahal in the death overs. So I think this will be the combination I will go with against Pakistan. And who knows, maybe अगर batting friendly pitch रहा, then Harshal Patel can also come in for one of the bowlers. बिल्कुल एग्जैक्टली संचित, मेरा कॉम्बिनेशन भी मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि यही लेके जा रहा है, स्पेशली क्योंकि अर्शदीप को आप ड्रॉप नहीं कर सकते, क्योंकि वेदांत ने जैसा अभी बताया वेस्ट इंडीज के केस में कि आप जिस प्लेयर को तैयार कर रहे हो उस पोजीशन के लिए, फिर आप उसको एकदम एंड मोमेंट पे आके ड्रॉप कर दो, तो ये जस्टिफाइड नहीं लगता है, क्योंकि आपने इतने टाइम से उससे मेहनत कराई, इतने टाइम तक आपने जो है उसको तैयार कराने की कोशिश की, फिर एकदम एंड मोमेंट पे उसको आप ड्रॉप कर दो तो कहीं ना कहीं जस्टिफाइड नहीं रहेगा। दूसरी बात यह है कि उनकी क्वालिटी एज अ डेथ बॉलर काफी टाइम से देख रहे हैं कि एज अ डेथ बॉलर काफी अच्छे से इमर्ज हो गया है अर्शदीप, प्लस वो लेफ्ट आर्मर भी है, तो लेफ्ट आर्म जो है फास्ट बॉलिंग ऑप्शन की प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं अर्शदीप, तो काफी फेवर में हूँ मैं भी अर्शदीप को खिलाने के। बुमराह, चहल, भुवनेश्वर obviously are fixed, and as you mentioned, I would like to have Akshar Patel at that number 7 position in place of Jadeja, but let's see how it goes. Sunil bhai, अभी रोहित भैया ने एक क्वेश्चन मेंशन किया था यहाँ पे कि जो लीग है अभी उनके लिए यहाँ पर लोग जो अपने प्लेयर्स हैं वो लोग अपनी कंट्री के कॉन्ट्रैक्ट्स को छोड़ रहे हैं। अभी लेटेस्ट एग्जांपल देखने को मिला जेम्स नीशम का, ट्रेंट बोल्ट ने थोड़े टाइम पहले ये कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट नहीं किया, तो कहीं ना कहीं अभी तो बहुत जल्दी होगा ये कहना कि T20 लीग्स आर द फ्यूचर ऑफ क्रिकेट, बट कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो चुका है इंटरनेशनल क्रिकेट पे इन T20 लीग्स का ऑलरेडी। क्या व्यूज है आपके इस पर? Jadip, the world cricket is changing. As we all know that IPL has become the second most valuable league in the whole world, and you can't ignore the money it's earning. So it's huge, it's crazy. So like football, as we have seen football, international players are only focusing on leagues, and there are some international tournaments like ICC, like the World Cup and Euro Cup. So in future, we can see in the cricket as well that there will be only World Cups and Asia Cups, and there will not be any bilateral series, and it will be cut off to only leagues, and we can see a larger window for IPL as well, and we can see like a 5 to 6 months IPL window and other leagues as well, and player will prefer the money. Like when AB de Villiers was also retired, and Mrs. Malinga, the legend, got retired because he wanted to play for the league, and it's changing. The world dimension is changing, and we have to adapt. The players are adapting, and it will be this way in future. बिल्कुल, T20 लीग्स चेंज किया। संचित, प्लीज गो अहेड। Yeah, definitely. I think it's a very interesting topic to talk about because जैसे सुनील भाई ने कहा कि as much as the cricket purists would like to preserve international cricket, हम लोग का जो age group है, we have grown up watching international cricket. We have seen the likes of Sachin, Dravid, Sehwag, and Ganguly dominating the international cricket for quite a long years. So watching this sudden change might not go down well with the purist of cricket जो 80s 90s से क्रिकेट देखते आ रहे, बट there has to be a point of change, and the last few years recently bilateral series they have become pointless. So if you look at the popularity, even social media की अगर हम बात करें, many people would rather prefer to watch a franchise league tournament rather than watching the like, no offense, but watching the likes of Sri Lanka, Zimbabwe and other teams playing. So that is the difference between the teams. I mean, you have the likes of Australia, India, South Africa, England, and then the other teams. So popularity पूरा disparity हो जाता है वहाँ पे. तो
unfortunately that is the sad case of international cricket, and I see that what Sunil suggested, change happening. We might see franchise cricket dominating in the next few years, and already it has started. I mean, you can see South Africa has launched this new cricket league, and franchises are already popular there, and they have an established fan base. They have started acquiring different franchises outside the country to have that brand extension, जैसे हम बोल सकते हैं. जैसे we all know Rajasthan has a franchise now in South Africa and already in Caribbean. So it is going to be the same case in different teams as well. So that is going to be the case for cricket, and it is certainly not a bad thing. I know that कि international cricket को sacrifice, like, it is not going to go away. Like सब लोगों को लग रहा है कि international cricket चले जाएगा, ऐसे नहीं होने वाला है. There will be test cricket, there will be the Ashes, there will be proper high fierce India Pakistan matches in ICC event, but वो जो हम देखते आ रहे हैं bilateral series, I think that is going to be cut down, and we'll see more of franchise cricket, and I don't think that is necessarily a bad thing. One more thing, Completely agree. Yes, one more Sunil, point I please, would please. like to add is that in international cricket we only can play only 11 players, and some guys like Sindhu Samson and some brilliant talents have to sit. And in leagues, it gives the platform to everyone to showcase the talent, and that's also another point of it. बिल्कुल बिल्कुल, जैसा अभी इम्पैक्ट प्लेयर की बात चल रही है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में, तो बिल्कुल जो है आगे चल के रूल्स चेंज होंगे क्रिकेट के, काफी सारी नई चीजें इंट्रोड्यूस होगी. बट संचित वेरी राइटली मेंशन कि आपको खाली एक कंट्री के पर्सपेक्टिव से नहीं सोचना चाहिए. एज एन इंडिविजुअल आपको एक प्लेयर के पर्सपेक्टिव से भी सोचना चाहिए कि हर कोई इंडिया में नहीं पैदा हो रहा है, हर कोई इंडियन क्रिकेट टीम के लिए नहीं खेल रहा है, हर कोई आईपीएल नहीं खेल रहा है, या हर कोई इंग्लैंड में पैदा नहीं हो रहा है जहाँ पे सैलरी स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा होता है. आप छोटे कंट्रीज में भी जाते हैं, वेस्ट इंडीज में जाइए, पाकिस्तान श्रीलंका में जाइए, न्यूजीलैंड में जाइए, और काफी एसोसिएट नेशंस हैं जिनको टूर्नामेंट से पहले 1-2 महीने तैयारी करने के अलावा पूरे साल अपनी रिस्पेक्टिव कंपनीज में जॉब करनी पड़ती है. तो इट्स अ गुड थिंग फॉर देम कि T20 लीग जाएंगे तो वो पूरे साल कहीं ना कहीं खेल सकेंगे, लिविंग अर्न कर सकेंगे. उनके लिए काफी अच्छा है. बट फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट वेरी राइटली मेंशन कि एकदम से ऑल ऑफ अ सडन ये खत्म नहीं हो जाएगा. थोड़ा सा इसकी पॉपुलैरिटी डाउन हो सकती है क्योंकि लीग्स काफी ज्यादा आ रही हैं, बट पूरी तरीके से खत्म नहीं हो सकता. बट अगेन कमिंग टू वेदांत, वेदांत सेम क्वेश्चन, आपके क्या व्यूज है इस पर? राइटली जैसे संचित ने बोला कि बायलैटरल सीरीजेस धीरे धीरे इट वुड लाइक कट ऑफ, बट व्हाट आई थिंक इज कि क्या होना चाहिए, जैसे संचित ने बताया कि टॉप 7 टीम्स अलग है जिनका लाइक ऑलवेज सीरीज चालू रहता है, बॉटम 7 मतलब श्रीलंका बांग्लादेश अलग है. सो ऐसे हो सकता है इन फ्यूचर कि बायलैटरल कट ऑफ हो और ट्राई सीरीज स्टार्ट हो जाए, जैसे टॉप 7 की 2 टीम और बॉटम 7 का कोई भी एक टीम, दैट विल ऑल्सो जनरेट स्पॉन्सरशिप फॉर देम, दैट विल ऑल्सो जनरेट इंटरेस्ट इन प्लेयर्स प्लेइंग फॉर देयर कंट्री. लाइक अभी रिसेंटली हमने देखा कि जिम्बाब्वे में कोई इतना रिसोर्सेस नहीं है तो भी दे आर परफॉर्मिंग वेल. बांग्लादेश को उन्होंने हराया, इंडिया को टफ फाइट दी, ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को हराया जो ऑस्ट्रेलिया का स्ट्रॉन्ग स्क्वाड था. So if they get a proper series like bilateral series, बहुत साल बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के साथ खेला, अगर वही ऑस्ट्रेलिया का तुरंत न्यूजीलैंड के साथ सीरीज था, वही अगर बायलैटरल सीरीज होने के मतलब इंस्टेड ऑफ दैट न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे का ट्राई सीरीज होता था, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग भी होता था क्योंकि जिम्बाब्वे को थोड़ा ज्यादा मैचेस वहां पे खेलने को मिलते. वी नेवर नो, लाइक अभी क्रेग अर्वाइन, मुजरबानी, वो जो उनके एक्सपीरियंस प्लेयर है वो नहीं थे तो भी वो जीते और वो अभी वर्ल्ड कप में वापस आ गए. सो दैट टीम कुड आल्सो सरप्राइज अस, जैसे अभी श्रीलंका ने हमको सरप्राइज किया, और वो टीम इज गेटिंग बेटर विद एवरी मैच. सिकंदर राजा इज इन गुड फॉर्म, रैन बॉल हमने देखा कि क्या कर सकते हैं, एक ओवर में 34 रन मारे थे उन्होंने अगेंस्ट बांग्लादेश. सो लाइक ऐसे टीम को एक्सपोजर दिया जाए, ऐसे टीम को लाइक बड़े टीम के साथ खेलने का मौका दिया जाए तो ही वो आगे आ सकता है. बायलैटरल सीरीज कट ऑफ हो, आई डोंट, मतलब मुझे लग रहा है कि हो भी सकता है इन फ्यूचर, बट ट्राई सीरीज बढ़ना चाहिए. ट्राई सीरीज या क्वाड्रेंगुलर सीरीज, दैट विल हेल्प स्मॉल टीम्स टू ग्रो. इवन आयरलैंड बिल्कुल आयरलैंड ने हमको कितना टफ फाइट दिया था. एग्जैक्टली बिल्कुल स्मॉल टीम्स के पास बायलैटरल्स खेल की अपॉर्चुनिटी रहेगी.
ग्रो करने के लिए ग्रो करने की कंप्लीटली एग्रीड विद विधान देयर। बट संचित, संजू सैमसन के बारे में हम ऑलरेडी बहुत सारा डिस्कशन कर चुके हैं, बट फाइनली एक छोटा सा पॉइंट मेरे दिमाग में और जो है क्लिक हो रहा है कि संजू सैमसन का T20 वर्ल्ड कप की टीम में सिलेक्शन नहीं हुआ है, एंड नॉट इवन इन आइदर ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका सीरीज एज वेल। तो वनडे में तो ये बात पक्की है कि वो खेलने वाले ही हैं। फिर उसके बाद इंडिया ए वर्सेस न्यूजीलैंड ए की जो सीरीज आ रही है उसमें संजू सैमसन को कैप्टन भी बनाया गया है। तो आपको कहीं ना कहीं लगता है कि बीसीसीआई संजू सैमसन को वनडेज में ज्यादा प्रेफर करना चाह रही है इस पॉइंट पे, क्योंकि हम अपन ने यहाँ पर भी देखा है इंटरनेशनल क्रिकेट में भी कि वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट भी उनको वनडे खेलने का मौका मिला, जिम्बाब्वे के अगेंस्ट भी उनको वनडेज खेलने का मौका मिला, और लगातार परफॉर्मेंस, लगातार चांसेस दिए जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक मैच दिया ड्रॉप किया। वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट सारे मैच खिलाए गए, जिम्बाब्वे के अगेंस्ट सारे मैच खिलाए गए, न्यूजीलैंड ए के अगेंस्ट आप कैप्टन है, एंड होपफुली साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी आप सारे मैच खेलने वाले हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं संजू सैमसन को मोर टूवर्ड्स ओडीआई क्रिकेट बीसीसीआई देख रही है। क्या लगता है संचित आपको? Exactly, Jaydeep. I think that was the first thing that I actually noticed जब से इंडिया वेस्ट इंडीज सीरीज हुई थी, and when we saw संजू सैमसन batting in that middle order. The best part about संजू सैमसन is कि उनको कौन से भी रोल दो, I think he is pretty much comfortable batting in every position. We have seen him opening against Sri Lanka last year, and then middle order में he has won a game for India against West Indies. तो संजू सैमसन का I think ये जो talent है, the ability to bat, the versatility जो हम कहते हैं, तो आई थिंक दैट इज गोइंग टू हेल्प इंडिया इन द लॉन्गर रन। जैसे निकुंज भाई ने आई थिंक कमेंट्स में कहा था कि संजू सैमसन नॉट बीइंग सिलेक्टेड इज डेफिनेटली हैज अ बिगर फ्यूचर फॉर टीम इंडिया गोइंग फॉरवर्ड। तो आई थिंक आई कंप्लीटली एग्री विद व्हाट निकुंज हैड टू से हियर, बिकॉज अगर देखा जाए इंडिया की नेक्स्ट असाइनमेंट्स, वी हैव द बिग 2023 वर्ल्ड कप नेक्स्ट ईयर इन जस्ट अबाउट 13 months टाइम, एंड उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी भी है इन 2025। तो as much as we hate to say it, but Sanju Samson has a bigger future in ODIs rather than T20s. अगर T20 squad में चलो ले भी लेते उनको, तो how many times will he be able to get opportunity in the matches? I mean, if you look at the पोजीशन संजू सैमसन बैट्स फॉर इंडिया, आई थिंक नंबर 4 पे आते हैं, नंबर 5 पे आते हैं। तो ऐसे कितने मैचेस मिलते हैं उनको कि वो प्रॉपर्ली उनका टैलेंट दिखा सके। बट इन ओडीआईज यू रियली वैल्यू someone like a Sanju Samson. Already, I think West Indies के एक मैच में हमने देखा when the top order collapsed, and it was Sanju's 42 not out which actually took India over the line in a very nervy finish for that matter. तो ऐसे मैचेस जिताने के लिए I think ODIs में ही प्रेफर करेंगे, and I don't think that's a bad thing. I think Sanju has a bigger future in ODI cricket rather than T20 cricket, and he's still I think 27 28 years old. I don't think उनका करियर खतरे में है. I think he still has a long 7 to 8 years of good years for Indian cricket. We have seen that with the likes of Rohit Sharma. He bloomed late. Starting में उनका talent recognize नहीं हुआ properly. He couldn't utilize his talent, but after that 2013 period, he was also I think 27 28 ही थे तभी मुंबई इंडियंस की कैप्टनसी ली and won the IPL. Similarly, Sanju Samson का भी वैसे ही हुआ, राजस्थान रॉयल्स की कैप्टनसी ली, didn't win it but फाइनल तक आ गए, and then you saw the rise of Rohit Sharma. So I'm not trying to compare both of them, but we can see a similar rise in Sanju Samson, and it can start with the ODI series from South Africa. I'm really happy with that, and I know कि मतलब with the cricket's point of view वो ODI series काफी meaningless होगी, but for someone like a Sanju Samson and other players who are really eyeing that 2023 वाला spot, it's going to be a big series. So I'm excited for that, and I hope that Sanju actually cements his place in the middle order. फिंगर्स क्रॉस्ड संचित। और मैं तो ये कहूंगा कि ओडीआई हो या T20, हमारा चेटा खेलना चाहिए, बस इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहिए। कहीं ना कहीं इमोशनल अटैचमेंट जो है संजू के लिए वो सामने आ जाता है। रोहित भैया भी मेंशन कर रहे हैं कि आई थिंक इज कंसिस्टेंसी इन ओडीआई विल मार्क हिज रिटर्न इन T20 टीम। तो ये बिल्कुल एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट मुझे लगता है कि अगर आप एक टीम के लिए परफॉर्म करते हैं तो आपको दूसरे फॉर्मेट में जाने का बहुत हाई चांस रहता है। जैसा कि हमने देखा कि वनडेज में लगातार श्रेयस अय्यर ने अच्छा परफॉर्म किया तो उनको टेस्ट में जाने का चांस मिला। तो बिल्कुल बीसीसीआई इन सब चीजों को कंसिडर करता है। बट सुनील भाई, इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज अब से कुछ ही दिनों में शुरू होने वाली है। 20th को फर्स्ट T20 खेला जाएगा। तो स्क्वाड्स ऑलमोस्ट सिमिलर टू द T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड।
बट कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस हैं, जैसे किसी टीम में अर्शदीप नहीं है, किसी टीम में जसप्रीत बुमराह नहीं है, और किसी टीम में हर्षल पटेल नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि जो है वर्ल्ड कप में जो हम टीम उतारना चाह रहे हैं उसको उतारना चाहिए, या ये फाइनल चांस है एक्सपेरिमेंट करने का, मोहम्मद शमी को अंदर लाने का, रवि बिश्नोई को खिलाने का, ये फाइनल चांस है, या आपको लगता है कि जो वर्ल्ड कप में आप टीम खिलाना चाहते हैं उसको खिलाइए, खत्म कीजिए बाकी सारी बातें और रॉक कीजिए? क्या लगता है आपको? Jadip, like every fan has like he's like enough of the experiments. We have seen around 50 plus players in last 2 years, and still the combination is not right yet. So like we have had enough. Now it's time to put a team and tell them that you 11 are going to play and take it as a final, because it's going to happen in Australia, the World Cup, and we have to take it as a World Cup preparation. After, like, it is one of the biggest rivalry. Earlier we used to have Pakistan versus India bilateral series. Now it's not happening. So India versus Australia is the biggest rivalry in the current cricket, and we have to take it as a World Cup scenario and try to win every single match. And I would also suggest to to pick some matches in which we decide to bat first and try to defend the totals. Like Rajasthan Royals did. Unfortunately, we lost so many tosses, but I would say that don't make it too easy, because like, we have to be ready for every situation, and we have to learn to how to defend the totals. And we also, like, we are good in chasing. We have Kohli, Rohit Sharma, and Surya Kumar. We are good in chasing, but we need to learn how to defend with Ashdeep and Jasprit Bumrah in death over, and in Bhuvi with swing bowling in the, like, in starting. So I'm very much confident that we will win the series and World Cup as well. बिल्कुल, जो आपने बात कही कि डिफेंड टोटल्स को कैसे करना है, इस चीज की तैयारी टीम इंडिया को करनी पड़ेगी। मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ सुनील भाई, क्योंकि डिफेंड करना टोटल्स को वो भी एक आर्ट है, जैसे चेज करना एक आर्ट है, टोटल्स को डिफेंड करना भी एक आर्ट है, और इक्वली इंपॉर्टेंट है। आप यूएई में 2 साल से खेले, आप पहले वर्ल्ड कप खेले, फिर आप एशिया कप खेले। एज अ फैन मैं अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए ये जरूर कह सकता हूँ कि टोटल्स इसीलिए डिफेंड नहीं हुए क्योंकि पिच डिटोरियोरेट हो जाता है बॉलर्स के लिए सेकंड इनिंग्स में यूएई में, तो इसलिए आप एशिया कप में बड़े टोटल्स, अच्छे टोटल्स बना के जीत नहीं पाए। बट दैट्स एन एक्सक्यूज। आप लोग क्रिकेट में अगर बेस्ट बनना चाहते हैं तो एक्सक्यूजेस देने से काम नहीं चलेगा, आप लोगों को करके दिखाना पड़ेगा। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि पिच डिटोरियोरेट होता है यूएई में, जो वहां पे हीट का प्रेशर रहता है, उसके अलावा पिच को जो है बहुत सारा पानी पिलाना पड़ता है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं यूएई में। बट फिर भी आप बड़े टोटल्स 170-80 के टोटल्स बनाते हैं, श्रीलंका के अगेंस्ट भी बनाया, पाकिस्तान के अगेंस्ट भी बनाया, तो आपके अंदर ये आर्ट होना चाहिए, आपके अंदर कला होनी चाहिए, आपके अंदर पार होनी चाहिए कि आप उस टोटल को डिफेंड करें, तभी आप एक प्रबल दावेदार मैं कहूंगा वर्ल्ड कप के बन के आ सकते हैं। सुनील भाई? जयदीप, क्योंकि किसी टीम्स ने करके दिखाया है, जैसे हम राजस्थान रॉयल्स का एग्जांपल ले, लास्ट आईपीएल उन्होंने करके दिखाया है, डिफेंड किया है टोटल्स को। न्यूजीलैंड जो टॉस जीतने के बाद भी पहले बैटिंग लेके डिफेंड किया, उन्होंने इंडिया को एलिमिनेट भी किया है डिफेंडिंग करके। सो सम देयर आर सम टीम्स विद दे हैव द बॉलिंग एबिलिटी, एंड वी हैव टू पिक सच यूनिट कि हम इनको डिफेंड कर पाए, वरना तो ये सिर्फ ओनली टॉस का गेम हो जाएगा कि वी हैव वॉन द टॉस देन वी हैव वॉन द मैच, और सो वी डोंट वांट टू सी दैट। बिल्कुल एग्रीड एग्रीड सुनील भाई। और जैसा कि आपने मेंशन किया टीम्स ने करके दिखाया, आपने राजस्थान रॉयल्स की बात करी, आई टेक इट टू वन लेवल अप, श्रीलंका ने ये करके दिखाया एशिया कप में, जहां पर हम लोग सब सोच रहे हैं कि पिच डिटोरियोरेट हो रहे हैं, वहां पर उन्होंने करके दिखाई ये चीज। 170 बनाए, उसको डिफेंड किया, एंड अगेंस्ट डिफिकल्टी। आप पाकिस्तान को आसान अपोनेंट नहीं कह सकते, आप नहीं कह सकते कि पाकिस्तान इजी थे, श्रीलंका जीत गई, श्रीलंका दिस श्रीलंकन टीम आर इन फॉर्म ऑफ देयर लाइफ तो वो जीत गई, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान एक डिफिकल्ट टीम थी, वो अपना पसंदीदा काम कर रहे थे, चेस कर रहे थे, बट उनके बॉलर्स ने करके दिखाया ये चीज, तो टीम इंडिया भी कर सकती। बट वेदांत, कमिंग टू यू, कितना इंपॉर्टेंट है ये साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से सीरीज जो अभी खेल रही है, नॉट इन टर्म्स ऑफ फाइंडिंग द राइटियस्ट एंड द फाइनल कॉम्बिनेशन फॉर द प्लेइंग 11, बट ऑल्सो कैसे उन प्लेयर्स का मोराल बूस्ट किया जा सके,
जिनको जो थोड़े से आउट ऑफ टच है, जैसे कि केएल राहुल हो गए, या फिर भुवनेश्वर कुमार। ऑब्वियसली अफगानिस्तान के अगेंस्ट मैच उनका बहुत अच्छा गया था, बट उससे पहले डेथ ओवर्स में थोड़ा सा कहीं ना कहीं उन्होंने डिसअपॉइंट किया। तो फाइंडिंग द राइट कॉम्बिनेशन एज वेल एज प्लेयर्स का मोरल बूस्ट करना, ये हाई टाइम है टीम इंडिया के लिए। ये दो सीरीज कितनी इंपॉर्टेंट है? Obviously, बहुत important है. We should find we ourselves lucky that we are getting to play a top two team before World Cup. साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया दोनों भी टॉप नॉच टीम है, एंड फेसिंग देम डेफिनेटली इट विल इंक्रीज आवर कॉन्फिडेंस. एंड जैसे आपने बात किया भुवनेश्वर कुमार का, डेफिनेटली नो डाउट ही इज अ ग्रेट पावर प्ले बॉलर, सुपर, वन ऑफ द बेस्ट पावर प्ले बॉलर. और बुमराह के रिटर्न आने के बाद आई थिंक उनका रोल डेथ में कम हो जाएगा. बुमराह एंड अर्शदीप विल फिनिश इन डेथ बॉलिंग, एंड हिज ही विल फिनिश हिज 3 overs इन पावर प्ले, एंड फोर्थ ओवर जो है वो 10th और 12th ओवर के अराउंड वो खत्म कर जाएंगे, जैसे सनराइजर्स के लिए क्या करते थे, या फिर जैसे धोनी यूज करते थे उनको इनिशियली, उनके ओवर खत्म करके इकोनॉमी भी उनकी बेटर रहती थी. और जैसे केएल राहुल का आपने बात किया, केएल राहुल हाँ डेफिनेटली स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन अभी लास्ट मैच में लगा कि ही गॉट हिज रिदम बैक. जब उन्होंने कोहली के साथ ओपन किया, इनिशियली मतलब हर प्लेयर के लिए डिफिकल्ट होता है इंजरी से वापस आना, स्ट्रेट आउट खेलना, और इतना हाई प्रेशर टूर्नामेंट खेलना. सो गेटिंग दिस 6 games उनके लिए बहुत, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए, टू एटलीस्ट फाइंड द मिडल ऑफ अ बैट एंड स्टार्ट स्कोरिंग. 20, 25, 30 runs भी बहुत है. दैट विल ऑल्सो इंक्रीज हिज कॉन्फिडेंस गोइंग टू द वर्ल्ड कप. और हमको 2 वार्म अप मैचेस भी मिलने वाले हैं. और एक्सपेरिमेंट की बात की जाए तो अभी ये 6 मैच ही चांस है, इफ यू वांट टू लाइक प्रमोट अक्षर पटेल. अब ये 6 मैच में देखो, अगर ये 6 मैच में इट वर्क्स देन यू कैन थिंक ऑन इट. अदरवाइज नहीं वर्क हो रहा, देन स्टिक टू अ प्लान कि अक्सर को यू कांट यूज एज अ फ्लोटर. उनको जो डिजायर पोजीशन है उस पर ही रखने का. वी डोंट नीड अ लेफ्टी, वी कैन ट्रस्ट आवर राइटीज एंड गो ऑल आउट. बिल्कुल, बिल्कुल, एग्जैक्टली वेदांत, बिल्कुल एग्री करता हूँ इस बात से कि ये 6 मैच हैं, इनमें आपको जो भी फाइनल करना है कर लो। उसके बाद आप अगर चेंजेस करते हैं तो इट्स अ स्टूपिड एक्ट, क्योंकि आपने सब चीजें फाइनल कर ली। उसके बाद आप फिर वही गलतियां कर रहे हैं जो 2021 में हुई। तो इट्स अ स्टूपिड एक्ट फॉर श्योर। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं 6 या 8 मैचेस में जो भी है सब फाइनल करके, और वी शुड बी रेडी टू रॉक। बट रोहित भैया ने मेंशन किया है, रोहित शर्मा निकल गया मेरे मुंह से। रोहित भैया ने मेंशन किया है, आई थिंक टू विन games one player from a team has to step up and other has to support. Then pitch may not be the case to decide win or lose. बिल्कुल रोहित भैया की बात से मैं एग्री करता हूँ यहाँ पे कि आप लोग को एक दूसरे का सपोर्ट करना पड़ेगा। दैट्स वाई क्रिकेट इज अ टीम गेम। क्रिकेट एक बंदे का प्लेयर नहीं है, क्रिकेट इज अ टीम गेम। हर एक खिलाड़ी को सपोर्ट करना पड़ता है। राजस्थान रॉयल्स में हमने देखा, ऑब्वियसली जॉस बटलर जो है बाकियों से थोड़ा आगे थे, बट सब ने सपोर्ट किया, यूजी ने सपोर्ट किया, अश्विन ने, प्रसिद्ध कृष्णा वाज ग्रेट। तो आप लोग जब एज ए यूनिट परफॉर्म करते हैं तो आपके लिए फिर टॉस उतना इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता है। बट संचित फॉर टीम इंडिया एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, वैसे तो डिस्कशन काफी हो चुका है इस बात पे, बट फिर भी एक लास्ट सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अगर टॉस जीतते हैं इंडिया में साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, तो क्या चूज करना चाहिए? बैटिंग करके अपने आप को डिफिकल्ट सिचुएशन में ले जाना चाहिए, या फिर अपनी स्ट्रेंथ्स को बैक करें, चेजिंग की प्रैक्टिस करें? क्या व्यूज है? I think it has to be a balance of both. So I would definitely want us to bat first majority of the time because वही एक weakness है. So I completely agree with what Sunil had to say there. But अभी just जैसे आपने कहा कि बस 6 मैच बाकी है, तो we also don't want to see कि यार पूरे मैचेस बस बैट फर्स्ट ही कर रहे हैं, चेसिंग आ गई तो क्या होगा, because that is the same fear we had with Rajasthan Royals. If you remember, मतलब हम सब टॉसेस हार रहे थे, तो गलती से बैटिंग सेकंड आ गई तो क्या करें. I think we lost the match against Gujarat when we chased for the first time. We got bundled out for some 130 140. तो वो ना हो, इसीलिए I wanted to be a balance of both. तो ऐसे देखा जाए, अगर प्रैक्टिकली देखा जाए इन ले मैच टर्म, 6 मैचेस है, 3 मैचेस बैटिंग फर्स्ट कर लो, 3 मैचेस बैटिंग सेकंड कर लो. बट वी ऑल नो टॉस इज नॉट इन आवर कंट्रोल. तो आई वुड लव दैट फॉर टू हैपन, बट प्रायोरिटी यही रखनी चाहिए कि विन द टॉस बैट फर्स्ट शुड बी द ऑप्शन. आई वुड लव टू सी भुवनेश्वर कुमार को कैसे यूज करते. विल दे
depend on him in the death overs, or will we see him being used in the power play? क्या combinations करते हैं? Will we see a little bit of experimentation in the batting order? Because I feel कि I don't know whether I want it to happen, but मुझे से लग रहा है कि we might see a batting order shift in 1 or 2 games, and I think we have seen that कि इंडिया का जो स्ट्रगल है लेफ्ट आर्म पेसर्स के साथ, it is gonna haunt us. एंड पहला ही मैच पाकिस्तान के सामने, तो वी माइट सी इंडिया एक्सपेरिमेंटिंग विद देयर बैटिंग ऑर्डर. तो मुझे ऐसे लग रहा है कि वी माइट सी अ लेफ्ट हैंडर बैटिंग इन द टॉप 3 अगेंस्ट अ टीम लाइक पाकिस्तान, जस्ट टू काउंटर दैट लेफ्ट आर्म पेस ऑफ द ऑपोजिशन. तो वो हम कर सकते हैं ट्राई आउट इन दिस नेक्स्ट 6 मैचेस, वेदर इट वर्क्स और नॉट. मे बी समवन लाइक ऋषभ पंत जो ऑलरेडी ओपन कर चुके हैं, वी माइट सी हिम बैट in the top 3. I'm not saying that it's a good idea or not, but just to prepare ourselves for the worst. कि अगर still we are facing issues against left arm pace, तो ये कर सकते हैं क्या? तो we might see that happening, but I would still want us to play our best 11 on the pitch. चाहे बैटिंग ऑर्डर में आप कर सकते हो एक्सपेरिमेंट, but best 11 should play all the 6 matches. क्योंकि ऐसे excuses हमें फिर से नहीं देखने चाहिए कि अरे we were not prepared for Pakistan, क्योंकि we lost it for that same reason last year. We took the warm up matches casually, किसी को भी खिलाए, and then when Pakistan came, we were completely blown apart. So we want us to be prepared for that Pakistan test, and then uske baad we can just hope that momentum rides us on. बिल्कुल कंप्लीटली एग्रीड संचित. क्योंकि मुझे भी लगता है कहीं ना कहीं कि जो है आपकी तैयारी यहाँ पर पूरी हो जानी चाहिए. इसके बाद आपको खाली जाके जो है अपने जो तैयारी है उसका प्रदर्शन करना है, जो है आपको रिजल्ट्स दिखाने हैं वहां पे लोगों को कि हमने तैयारी करी है, वी आर रेडी टू रॉक, वी आर रेडी टू विन द वर्ल्ड कप. वहां पर जाके आपको रिजल्ट्स दिखाने हैं, तैयारी आपको यहीं करनी पड़ेगी. और मुझे लगता है कि इस फैक्ट को कहीं ना कहीं कंसिडरेशन में टीम मैनेजमेंट ले सकता है, बट नहीं लेना चाहिए कि मार्कस टॉयनिस, मिशेल स्टार्क और आई गेस वन मोर प्लेयर इज वन मोर सीनियर प्लेयर, आई गेस मिशेल मार्श, मिशेल स्टार्क, मिशेल मार्श एंड मार्कस टॉयनिस आर नॉट देयर इन द ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड. तो इस बात पे अगर मैनेजमेंट ये सोचता है कि हम आसानी से जीत जाएंगे तो हम चॉपिंग एंड चेंजिंग कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए. इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको एक फाइनल प्लेइंग 11 प्रिपेयर करनी है और उसको जाके ले जाके ऑस्ट्रेलिया में पुट करना है. इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप गलती नहीं कर सकते और आपको एक फाइनल प्लेइंग 11 एनी हाउ तैयार करना ही पड़ेगा. बट एनीवेज, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सुनील, पाल रॉयल्स का ऑप्शन बिल्कुल आ गया है, ऐसे T20 का ऑप्शन, और अपनी तीसरी फ्रेंचाइजी जो है पाल रॉयल्स, वो बिल्कुल तैयार है प्लेयर्स खरीदने के लिए. ऑलरेडी बड़ी बड़ी साइनिंग्स है, जॉस बटलर जो है टॉप ऑर्डर में, डेविड मिलर जो है फिनिशिंग रोल के लिए, और कॉर्बिन बॉश जो कि काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं CPL में भी. तो आपके ओपिनियन में कौन से वो साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स होने चाहिए, साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स आई एम आस्किंग फॉर, जिनको टारगेट किया जा सकता है इस ऑप्शन में टू मेक अ बैलेंस्ड एंड अ गुड स्क्वाड? Pals Royal already has started with bang with the Butler, Miller, Killer Miller, and Boss. So I think with Miller and Boss, our middle order is like stable, and we need some openers, and we need some batsmen at the top of the order. And I think I don't know whom other has picked, but I Quinton de Kock is free. Then I think we must pick him as he's also playing for the Barbados, and he's doing great. So we need some good player at the top and also some quality spin players as well. यस यस बिल्कुल, एग्जैक्टली. क्वालिटी टीम बनानी है तो ऑप्शन में मेहनत करनी पड़ेगी. वेदांत, ऐसे आपके कौन से साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स हो सकते हैं जिनको ऑप्शन में टारगेट किया जाना चाहिए एक बैलेंस स्क्वाड बनाने के लिए? सुनील ने डिकॉक का Sanchit, there might be some network issues with Vedant. You would but like so we to can't answer the have him. question? Okay, Hello, Yeah, he's back. am I audible? Yes, yes, Yeah, perfect. yeah, yeah, yeah. सुनील ने बताया कि डिकॉक ऑलरेडी सुपर जायंट फ्रेंचाइजी ने ले लिया डिकॉक को. सो वी कैन टारगेट जानिमन मलान. इज अ गुड ओपनर, प्रूवन ओपनर इन ODI सर्किट साउथ अफ्रीका का. इवन रिजा एंड्रिक्स इज देयर जो जॉस के साथ ओपन कर सकता है. इवन राइली रूसो जिसने अभी अभी इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी की है. सो वी कैन टारगेट देम. और आई गेस वैंडर ड्यूसन भी फ्री है. वी कैन
have our Royal back in our team. और फिर खाया जोंडो इज ऑल्सो गुड बैटर. और बॉलिंग की बात किए तो फिर वेन पार्नेल है, जूनियर डाला है, एंडिले फिक्लिकोवायो है. सो वी हैव अ फेयर बिट ऑफ ऑप्शंस देयर, बट लेट्स सी हम किसे लेते हैं. लेकिन वी शुड डेफिनेटली गो फॉर जानेमन मलान. ही इज अ गुड हिटर, अच्छी एवरेज 60 प्लस एवरेज है ओडीआई क्रिकेट में. सो वी ही कैन गिव अस अ कंसिस्टेंट रन विद जॉस एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर. सो लेट्स होप वी गेट हिम. संचित, सेम क्वेश्चन टू यू. ओवरसीज प्लेयर्स का तो अपने को आइडिया नहीं कि कौन कौन प्लेयर्स अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे, बट कौन से साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स को पाल रॉयल टारगेट कर सकती है ताकि एक बैलेंस स्क्वाड बनाया जा सके? I think I completely agree with what Vedant and Sunil said. I think definitely want to see the Royals first of all being picked. जैसे कि Rassi van der Dusen एक है. I think even Harry Tector एक option है. I'm not sure whether he's picked by a team or not, but already वो Barbados के साथ है and potentially could be with us Rajasthan Royals next season also. So Harry Tector एक overseas option रह सकते हैं from Ireland. But अगर local की अगर हम बात करें, then I would like to see someone like a fast pace Henrik Nokia or even Marco Jansen in our bowling department, because left arm pace को मैं काफी ज्यादा रेट करता हूँ. And I personally love Marco Jansen. Plus वो batting भी दे देते हैं in the lower order. We have seen him doing well with the lower order batting against India in the test match. So I would love to see Marco Jansen in the bowling department. And other options में Lungi Engidi भी है एक option. So we can pick him. It's either of Nokia or Engidi. I think we can get either one of them, that's for sure. तो ये थोड़े बहुत नाम मेरे दिमाग में आते हैं, but it all depends upon that. Is Tristan Stubbs? I think Stubbs तो already ले लिया होगा मुंबई इंडियंस ने, because he is also one of the highly rated South African that I wanted, but still, yeah, I think it's a good team. Still, we can play that. Stubbs ऑप्शन में है. है ऑप्शन में? हाँ. Oh, interesting. But we all know that Mumbai Indians. ब्रेविस को लिया है मुंबई ने. But Mumbai Indians ले लेगी यार उनको. So I think he's going to be that higher price kind of a player already, because World Cup में भी आ गए हैं. So who knows? We might steal Stubbs from Mumbai Indians just like we stole the likes of Bolt and Chahal. So I would love to see that happen. तो ये काफी नाम मैं देखना चाहूंगा personally for Pal Royals. बिल्कुल बिल्कुल, एक स्ट्रॉन्ग स्क्वाड बनाने की कोशिश करेगी हमारी टीम वहां पर साउथ अफ्रीका में भी, और एक ऐसी मैच विनिंग स्क्वाड बनाने की कोशिश करेगी जो हमको काफी सारे मैचेस जिता के दे. बट आई एग्री विद ऑल ऑफ यू कि राइली रूसो को लिया जाना चाहिए, मार्को येंसन को लिया जाना चाहिए, इवन ट्रिस्टन स्टब्स को भी देख सकते हैं, एंड इवन आई कंसिडर डुवान येंसन एज वेल, क्योंकि उनका जिस तरह का सीपीएल में परफॉर्मेंस जा रहा है वो भी काफी अच्छे प्लेयर हो सकते हैं. और मुझे लगता है कि उनको उतना ज्यादा उनको खरीदने के लिए उतना ज्यादा इंटेंस ऑक्शन के अंदर भी नहीं जाना पड़ेगा. आप उनको आसानी से ले सकते हैं. ही माइट बी दैट impactful player, but who knows how it goes. Let's hope for the best. तो काफी मजा आया आप लोगों से बात करके. It's 9:46 already. It's been too long already. तो काफी मजा आया आप लोगों से बात करके, आप लोगों के इंटरेक्शंस जान के. ताहिर के साथ बात करके भी मजा आया. सुनील, संचित, वेदांत, थैंक यू सो मच. आप लोगों से बात करके, क्रिकेट के बारे में बात करके हमेशा मजा आता है, और जब इतनी लंबी बातें चले तो फिर और भी मजा आता है. कमेंट्स जिन्होंने भी किए उनके लिए भी बहुत बड़ा वाला थैंक्स, क्योंकि आप लोगों की वजह से इंटरेक्शन यहाँ बना रहता है. हमारे पास आइडियाज आते रहते हैं किन किन टॉपिक्स पे बात करनी है. तो थैंक यू सो मच आप सब लोगों का. बहुत मजा आया आप लोगों से बात करके. मिलेंगे अगले वीक सैटरडे को रॉयल्स ऑन द रोड के 11th एपिसोड में. तब तक आप फॉलो करते रहिए सुपर रॉयल्स को, राजस्थान रॉयल्स को सपोर्ट करते रहिए, और वर्ल्ड कप आ रहा है तो इंडियन टीम को भी सपोर्ट करते रहिए. टिल देन, अल्लाह बोल. अल्लाह बोल. अल्लाह बोल.